The objectives of our today's lecture are the following. What is a computer? What is a data? What is in processing? And what is an information? आज हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। What is a computer? What is a computer? A computer is an electronic device that accepts user input and processes it under the influence of set of instructions referred to as a program. To produce the desired output, generally referred to as information. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। Now, what is a data? A data are the raw fact may not make much meaning to the user. अब डाटा क्या है? डाटा एक रॉ फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन है which is not quite meaningful as information. For example, student marks. Now, what is a program? Program are the set of instructions that instruct a computer what to do. प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि कंप्यूटर ने किस तरह की और क्या प्रोसेसिंग डाटा के ऊपर करनी है। Now, what is an information? Information is a result after data has been processed. डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनल आउटपुट हमें मिलती है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज, एवरेज और पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन. To convert data into information, there are 3 main steps involved. The first step is input, the second step is process, the third and final step is output.